Yes, sir. I think all join. Now we can start. Sure, sir. So hi everyone, good evening. So as per our last class, you already aware of that this is going to be the combo batch for MCSA, SCCM, and later on if you want you can go for Office 365 and then Azure also, right? So in the last session, I have showed you what and all topics we are going to cover under SCCM as well as under MCSA. Okay. And even we have explained, we talked about that how we are going to deploy our labs, how we are going to deploy our practicals. Okay. So I hope last time I gave you the links also to download the VMware or to download ISO images from the Microsoft website. So have you all downloaded all these softwares? Have you downloaded? Have you completed all the prerequisites? Can you please confirm? No one, is it? Okay, so could you please confirm, would you all be there in my first session? That was on last Monday. Can you please confirm? Based on that only, I am going to, start today's session. Guys, please respond. Hello. Yeah, hi, Himanshu. Yeah, hi. Uh, well, I am. This is my first class, and I don't know anything. Okay, You're okay. telling, yeah. That's why I'm very sorry. I don't. Well, I know about the VMware, how to install and how to use it. Mm-hmm. So we can continue for Okay, okay, no problem, Himanshu. yeah. Chandan, were you there in the last session? Okay, anyways, so let's begin. Give me a moment, guys. Sir, could you please make me the host? One minute, sir. Yes, please. Okay, thank you. So, just give me a moment. Okay. Hello. Yeah, hi, Rohit. Hello, sir. I'm not available on last Monday. Okay, okay, no problem, no problem. I'm starting from that point only again. Yes, sir. Okay, so first of all, let's talk about the prerequisite if you want to work with MCSA, right? If you want to work with if you want to deploy the labs on, or if you want to learn about servers, in that case, we must need it some of the prerequisites. We have to complete it, right? So in order to configure our labs, so we will be using one technology called virtualization. Okay, and for that you can use any of the tool. It could be VMware, or it can be your Hyper-V, or it can be Oracle also, VirtualBox also, right? So depending upon your need, or as per your convenience, you can use any of the tool, right? Because at the end we have to configure servers over there, and we need to
like whatever the labs we are going to cover, you have to deploy it either on your any of your hypervisor. Okay, so mostly I am going to use VMware, right? So in order to download the VMware, right, so it is a trial version first of all, right? So if you are going to download VMware from internet, right, so it is going to give you a trial for 30 days, right? But later on I will let you know how we can activate it, right? So we can download the latest version of VMware. Workstation Pro, right? And then you can define type of your operating system. So as we are going to work on Windows, so you can download this version either for Windows 10 or either for Windows 11, right? So you have to go to on download now, and then you will be able to see the download. Okay, so once the downloads will complete, then you have to install it in your laptop, right? So Sir, let can you me, please share the link in Zoom chat? yeah, sure, I'm doing the same. Thank you. Yeah, so this is the link in the chat box. It is already there, so you can download the setup from internet, and later on, for now you have to just install it. It will be valid for 30 days. Okay, but I will let you know the procedure, how we can activate it and how we are able to like it is not going to ask you for the activation again. Okay, after that we will be needing ISO images also. In order to build our virtual machine, in order to build a operating system, right, we need to install, we need to have one ISO. Okay, so for ISO, again you can go to Microsoft website, or you can directly say right here, download Windows Server 2019, 2016, 2022. Whatever you want to work on, you can select, right? So we are going to work on evaluation version, right? So evaluation version is valid for 6 months. The license is valid for 6 months, right? So if we are going to work on Windows 10 also, so in that case, we will download Windows 10 evaluation version only. Why? Because it will give us the activation till 6 months, right? So you need to go to 2019 Microsoft Evaluation Center, and here you have to fill out some of the information. So you can select download the ISO, and then you have to just give some of the information here, and then you will be able to download it. Okay, and this link also I am giving in the chat box. Okay, and the last one is client machine. We have to check whether whatever we have configured in our environment, are we able to get all the services on our client machines or not, right? So client machines can be either Windows 11 or can be Windows 10. Okay, so mostly we are going to work on Windows 10. Download Windows 10. So in this case also we are going to use evaluation version. Okay, and go to Windows 10 Enterprise Microsoft Evaluation Center, and here also you need to just select download the ISO Enterprise. Okay, and this link is also available in your chat. First we have to download VMware, and then we have to install it, and later on we have to download the ISO images of Windows 10 and Server 2019, or if you want you can download 22 as well. 2022 is the latest version of operating system, Windows operating system, server operating system, so you can download it and we can work on it, right? But still nowadays companies are still using 2016 or 2019, so 2022 is not majorly used in the organizations, but if you want we can use it, no problem in that case, right? So after downloading, you will be able to see the icon on your desktop, or you can search it in your programs also,
and then you have to create a new virtual machine, right? So in my case, you can see I have already configured number of virtual machines under my VMware. So it totally depends on the configuration of hardware that you have. It totally depends on the configuration of laptop that you have. Okay, so if you have the configuration which is more than 8 GB of RAM, then I would recommend to use VMware or Hyper-V in your own laptop. No need to go for Azure, and no need to go for this networking labs, because I want you to configure all the things from scratch, right? Because in case of networking labs and in case of Azure, their virtual machines are already created. You have to just click on start button, that's it, and you will be able to get the console of the VM. But in this case, you have to create it. You have to create a VM from very scratch, right? So I would recommend, if you have the RAM which is more than 8 GB, so you can go for you can go with the configuration of your own laptop, right? And then if you do not have, in that case, either you can go for Azure or you can use the networking lab. So I will show you both the options, how you can get, or how you will be able to configure the VMs and how to use the networking labs. So we will talk about that as well. Then if you are configuring it in your own laptop, then in that case, we will be needing to create, we have to create one new virtual machine. Okay, so what you can do, either you can go to file and then you can select new virtual machine, or you can go to home and then you can, here also you can select create a new virtual machine. So select this option and then go next. So now it is asking you to upload the ISO image, right? So either you can select here itself, or you can select later on also, right? So it is not mandatory that here only you have to select the ISO image. Later on also we will be able to get the option. Okay, then I am going with I install the operating system later, and then go next. So now it is asking what kind of operating system you want to install. So in the VMware, you can create Microsoft Windows, you can create Linux, you can create VMware ESXi, right? But we want to work on Windows, so you can select Microsoft Windows, and then what kind of operating system, what flavor of Windows operating system you want to install. So it would be, if in case you are using you have downloaded the ISO for 2019, then you can select 2019. If you have downloaded 2012, then you can select, sorry, if you have downloaded 22, then you can select 22 also. Okay, now let's suppose I'm going with 2019, but for this I need to check whether I have the ISO of 2019 or not. Just give me a moment. ISO 2016, sorry, I do not have the ISO. So what I will do is let me select 2016. Process will going to be remain same, right? There will be no difference in case of 2019 or 2022. You have to follow the same process. And then next, you have to give the virtual machine name. Okay, let's suppose I am naming it as my-VM1, right? And then next, then firmware type, BIOS or UEFI. So we have to select UEFI. The difference basically in BIOS and UEFI is we have a dedicated topic under which I will let you know what is BIOS and what is UEFI. But the major difference is, in case of BIOS, you will not be able to use the hard disk which is more than 2 TB. BIOS doesn't support the hard disk which is more than 2 TB. But in case of server,
The hard disk can be of huge storage, right? It can be in petabytes. Okay, so that is why we have to go with UEFI. Okay, the major difference is in case of BIOS, you cannot use a hard disk which is more than 2 TB, but in case of UEFI, it supports the hard disk which is lower than 2 TB as well as it supports the hard disk which is more than 2 TB. Okay, so that is why we need to go with UEFI. And second major difference is UEFI only supports 64-bit operating system. Okay, it only supports 64-bit architecture. Right. Now, let's go to next. Number of processor, number of cores we can take. For now, I am already using only one processor, right? So either I can go with one, but in case you are working in production environment, right? In that case, maybe you have seen your server has a 16-core CPU, right? 32 virtual CPUs. So based on the cores or based on the processors, you can provide the processor and the cores to your virtual machine. Higher will be the processor, higher will be the performance of your VM. Lower will be the processor, lower will be the cores of the processor, lower will be the processing speed of your virtual machine. Okay, so it totally depends that how many cores and how many processor you are defining to your VM. Based on that only your VM is going to be respond. Okay, then go next. Now again, memory also depends that how like it's in my case I'm giving it as 2 GB, which is more than enough for lab purpose. But if we are going to work in the production environment, in the real-time environment, it can be 64 GB, it can be 32 GB. Means totally based on the configuration of your server. If your server has 128 GB of RAM, if your server has 256 GB of RAM, in that case, based on the RAM size, we can distribute the RAM among our virtual machines. Okay, but for lab purpose, as we are going to work in the lab environment, 2048 is more than enough for us, and we will be able to complete all the practicals within this configuration. Okay, then go next. Then network connection we are getting. Okay, so if you are going to use bridge networking, right? So in that case, we will be able to communicate with our base machine. Means if you want to communicate, let's suppose you are configuring this VMware on Windows 10, right? And you want to communicate with your Windows 10 machine. In that case, we can use bridged networking, right? So you will be able to ping your base machine in this case if you are using this networking type. Second will be NAT, that is network address translation. We have a topic of NAT, how NAT actually works. So basically NAT is basically helps us to convert our private request to public IP and public request to private IP. Means we already knows that internet only works on public IP, right? But if you're talking about if you're checking in your just check in your organization, or you can check in your home network as well, right? So if you're going to check the IP of your system, or if you are going to check IP of your phone,
So maybe you're getting the private series of IP. Okay. But how with the private series you are able to connect to the internet? How come so? So this is all because of netting. So because of netting, we are able to use internet on our private series of IPs also. So if I'm talking about my home network, in that case, netting is configured on my router. That is why if I'm getting a private series, I am able to connect with you. We are able to communicate. Okay. Then the third option is host only network. So if I want to isolate these VM from outside world or even from my base laptop also, right? And I want only these VMs will be able to communicate with each other. Only these VMs. Other than that, it will not be able to communicate with my base machine, as well as it will not be able to communicate with internet as well. Means there will be no internet accessibility if I'm going to use host only networking. So it totally depends on our practical, right? So as of now, I am using use host only networking. But if let's suppose we need internet on our VM, so in that case, we can play around with these two options. Right? So we do have the practical of VPN, right? We have the practical of WSUS, under which internet is needed on the machine. We have the topic of netting also. Okay. So for that, we will be needing internet on our VMs. Okay. But mostly, I'm going to use host only networking because I want only these VMs will be able to communicate with each other. Other than that, no one will be able to. But if in the case I will be needing the VM should be communicate with my base machine, or it will be accessible on the internet as well. So in that case, I can play around with these two options. Okay. Now next, leave it as it is. NVMe. So this is a type of virtual disk. This is a type of hard disk, right? So if okay. I'll use okay. Okay, no problem. So virtual disk type, जिसमें आप क्या करोगे, आप अपनी हार्ड डिस्क का टाइप सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है. एनवीएमए उस केस में होगा अगर आपके सिस्टम में एसएसडी कनेक्टेड है, राइट. एंड साटा इज बेसिकली अगर आप नॉर्मल एसडीडी नॉर्मल हार्ड डिस्क ड्राइव यूज कर रहे हो. एंड द कंपैरिजन आप लोगों को पता ही होगा. इन केस ऑफ एनवीएमई द रीड एंड राइट स्पीड of data is high in case of NVMe or SSD. Okay, so as my system is using SSD, that is why I'm getting this option. But अगर आपके पास नहीं होगा, so in that case you will be getting SATA, और उस केस में आपका जो OS का स्पीड होगा, that will be bit slow. थोड़ा स्लो हो सकता है. ठीक है. And then let's go to next. Now obviously we have to create a new virtual disk. Then next, and we have to define the size of our hard disk, right? So again, for our practicals, 20 GB hard disk is more than enough. ठीक है. 20 GB हार्ड डिस्क हमें बहुत है हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए, बट हमें जहां ज्यादा चाहिए होगा, so we can increase the hard disk size also, or we can attach one more hard disk. So that is not a
concern, right? We can do it. And then you can go to next and finish. तो मतलब आप ये समझो, अगर एक लैपटॉप को आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है एक लैपटॉप में, तो उस लैपटॉप में जो जो रिक्वायरमेंट है ओएस को इंस्टॉल करने के लिए, सेम रिक्वायरमेंट आर इन केस ऑफ वीएम ऑल्सो. अब लैपटॉप को रैम भी चाहिए, लैपटॉप को हार्ड डिस्क भी चाहिए, लैपटॉप को प्रोसेसर भी चाहिए, लैपटॉप को नेटवर्क भी चाहिए, राइट? सो सेम ऑप्शन वी आर गेटिंग इन वीएम ऑल्सो. अगर आपको एक वीएम बनाना है, आपको रैम भी असाइन करना पड़ेगा, आपको प्रोसेसर भी लेना पड़ेगा, आपको हार्ड डिस्क भी डिफाइन करनी पड़ेगी, आपको नेटवर्क अडेप्टर भी लेना पड़ेगा, एंड देन CD DVD. ये बेसिकली ऑप्शनल है, इट इज नॉट नीडेड एट ऑल. नाउअडेज CD DVD बहुत कम यूज होती है, राइट? सो बट दिस ऑप्शन इज टोटली optional, right? It is not needed at all. But basically what I'm trying to understand, what I'm trying to explain is कि जो भी एक लैपटॉप में अगर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, राइट, तो उसमें भी आपको लैपटॉप के अंदर ये सब रिसोर्सेज होने चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑनटू इट. ऐसे ही वीएम के केस में भी आपको ये सारे रिक्वायरमेंट्स हैं. ठीक है, अब हमने सब कुछ कर लिया, बट हमने ISO इमेज सेलेक्ट नहीं किया, राइट? सो व्हाट वी हैव टू डू, यस रोहित प्लीज. हेलो यस रोहित प्लीज गो ऑन. सर, इसमें जब हार्ड डिस्क जो 20 GB है, हाँ जी. इसमें मैंने अपने यहाँ चेक किया था अपनी कंपनी में. हाँ. तो मैंने हार्ड डिस्क 20 GB को अगर मैंने 40 या 60 GB के अराउंड कर दिया था, हाँ. तो उसका विंडो करप्ट हो गया था. सो दिस इज वी आर टॉकिंग इन केस ऑफ OS. ऑपरेटिंग सिस्टम की बात नहीं कर रहे हम, ठीक है? वी आर टॉकिंग अबाउट एडिशनल हार्ड डिस्क वी कैन अटैच. ओके. ठीक है. और अब तो जो, अगर मैं एज्योर के बारे में बात कर रहा हूँ, क्लाउड की अगर आप बात कर रहे हो, तो क्लाउड में आप ऑपरेटिंग सिस्टम की डिस्क का साइज भी बढ़ा सकते हो. इन क्लाउड इट इज पॉसिबल. ओके, बट मैंने इसे 20 साइज जो है उसको मैंने इंक्रीज करके 60 GB के अराउंड कर दिया था. हाँ, वो फॉर्मेट हो गया होगा ना सारा, फिर ऑब्वियसली Yes, ओएस उड़ sir. जाएगा. तो कोई वैसा विदाउट अटैच अगर इसका साइज इंक्रीज कर सकें, इफ एनी सोल्यूशन रिगार्डिंग दिस. नहीं, देयर इज नो सॉल्यूशन. उसके लिए आपको फिर वही ESXi यूज करना पड़ेगा VMware का. ओके. Okay, in case of workstation it is not possible. ओके. Okay, but Thank you, in sir. case of cloud and in case of VMware ESXi, it is possible. You can increase the hard disk size of your operating system disk also. Okay, thank you, sir. Okay, cancel it. Okay, then you can go to CD DVD and we have to mount the ISO image. Okay, so you have to select use ISO image file and browse करके आपको वो ISO select कर देना है जिस ISO के साथ आप इस VM को create करना चाहते हो, right? So in my case I'm using 2016, but if you have downloaded 2019, then in that case you have to select 2019 ISO only, right? And then open and then OK. That's it, right? And now we can turn on our VM. Power on this virtual machine. And tap any of your key. Yes, and then next, install now. So at least आप लोग कल तक ये सब इंस्टॉलेशन करके रख लेना, so that कल से हम अपने लैब एंड जो भी हमारे टॉपिक्स हैं वो अच्छे से स्टार्ट कर पाए. ओके,
राइट तो I would recommend कि आप मेरे साथ ही प्रैक्टिकल परफॉर्म करो so that if you are facing any kind of issue so at that time only we will be able to resolve it. Later on भी हो जाएगा but I would recommend कि साथ के साथ जो चीजें क्लियर हो जाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा. Okay. Then we are getting the option of standard evaluation or standard evaluation desktop experience, right? So if you are going with standard evaluation, the operating system type will be command based. So if you are well versed with PowerShell, if you are well versed with command line, then only you will be able to use this type of operating system, right? But we have the topic of PowerShell also, so we are going to work on the core server as well, right? But now we have to select desktop experience. Why? Because desktop experience is a GUI, that is graphical user interface. Okay, then go to next. And I accept the license. Next. Custom. Next. And here we go. Okay, so it will take around 5 minutes. Meanwhile, let me show you how you will be able to use the networking labs. If you want to work, if you want to configure your practicals on networking labs, so how you can use it. So you need to go to in a single hardware, Deepak, you can configure as many as you want. Depends upon the configuration of your machine. Okay, there is no limitation. Okay, now let me show you. Okay, this is not the one. Let me open this. So you can log on to Eve login, 𝐊𝐲𝐵, right? So once you will enroll, maybe even if you have already enrolled, so you will be getting this access, you will be getting this link, right? Maybe in your case, the port number will be different, right? And you can log in onto there with your credentials, and you will be able to log in. You will be able to use the networking labs. Okay, तो आपको यहाँ पर अपने credentials डालने हैं. I think again I forgot it. Okay. So this lab is going to be for your SCCM. So if you have enrolled for SCCM as well, Software Center Configuration Manager. So in that case, we will be needing 4 servers, right? So for SCCM guys, obviously, even me as well, I'm not able to configure these labs onto my own laptop. So again, for SCCM, we can either use the networking labs, or we can log in onto the Azure as well. We can sign up onto the Azure, and over there we will be able to configure our labs. Okay. Then I need to log into MCSA lab, right? Okay, let's suppose this lab I'm going to turn it on. What was it? The same one, huh? Okay, anyways, so what you need to do, you will be able to get the console like this after logging on to the 𝐊𝐲𝐵, right? And then you have to log in onto the server. What you need to do, right click on the server first of all, and then you can start it. ठीक है, इसके अंदर आपको ये सब ISO and all सब कुछ डालने की कुछ भी जरूरत नहीं है. एक बार विंडोज ये स्टार्ट हो जाए, आपको बस इसका कंसोल लेना है, दैट्स इट. सब कुछ इंस्टॉल्ड मिलेगा आपको इसके अंदर. कोई रैम आपको असाइन नहीं करना, कोई आपको हार्ड डिस्क नहीं लगाना, सब कुछ ऑलरेडी वर्चुअली अप्लाइड है यहाँ पर.
right? Same, let's suppose if I'm going to turn on server 2 as well. So how to take the console? You can just double click on the server. And same thing you can do for second as well. Okay, so this is the server that this is already installed. Okay, how you will be able to log in? So first of all, very first time, you need to tap Control Alt and Shift. Control Alt Shift, right? And after that, you have to select on screen keyboard and then Control Alt and Delete, right? And then again Control Alt Shift and then select none. And now you are able to log in here, right? So these login credentials also you will be getting in your emails. Okay, and the password is, I believe it should be, no, the different, just a second, yeah. ठीक है, तो इस केस में देखो आपको कुछ भी इंस्टॉल, जैसे हमने वहां पे VM इंस्टॉल किया, हमने हार्ड डिस्क सेलेक्ट किया, हमने ISO डाला, राइट? सो यहाँ पर ऑलरेडी 2019 सर्वर बनाया मिला आपको, एंड जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर हैं वो भी यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे एक कैच है, देखो जो यहाँ पे सारे सर्वर्स हैं, जितनी भी ये इमेजेस बनी हुई है सर्वर की, 1 2 3 जितनी भी ये इमेजेस बनी है, राइट? सो ये सारी इमेजेस क्लोन्ड इमेजेस हैं। क्लोन मतलब बिल्कुल एक सर्वर की कॉपी, एक इमेज की कॉपी बनी हुई है। तो उस केस में सभी सर्वर्स का ऑब्जेक्ट आईडी एंड सिस्टम आइडेंटिफायर SID वो सेम है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी डोमेन कंट्रोलर बनाना है या फिर किसी आपके DC में आपको कोई भी मेंबर सर्वर बनाना है, ज्वाइन करना है, इन दैट केस हमेशा आपकी जो ऑब्जेक्ट आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए, राइट? इट शुड बी यूनिक, नहीं तो आपको एक एरर आएगा कि जिसमें आपको वो दिखाएगा कि SID is already acquired by one of the servers, so you will not be able to use this server as a DC, or you will not be able to join this server into domain, क्योंकि आप अगर आप ये यूज करोगे तो पक्का आने वाला है। सो दैट इज व्हाई मैं आपको आज ही इसके बारे में बता रहा हूँ। तो आपको इसको रिजॉल्व कैसे करना है? सी, जितने भी आप सर्वर्स लोगे, ठीक है, अगर मान लो आपकी कॉन्फ़िगरेशन आप 2 सर्वर्स पे कर रहे हो, 3 पे कर रहे हो, 4 पे कर रहे हो, सो इन दैट केस आपको हर सर्वर पे बिफोर द लाइक आफ्टर यू विल बी एबल टू गेट द कंसोल, आपको हमेशा क्या करना है? आपको एक कमांड रन करनी है, दैट इज sysprep. That is not a command, that is basically a tool. ठीक है, तो उसके लिए क्या करना है? Go to C drive, go to C drive and then go to Windows and then go to System 32, right? And after that you need to search for sysprep. तो sysprep क्या करता है? आपकी जो आइडेंटिटी है, आपकी जो करंट आइडेंटिटी है, उसको रिमूव करके एक नई आइडेंटिटी आपको दे देता है। ठीक है, तो हर सर्वर्स पे बिफोर गोइंग ऑन टू द, कोई भी रोल्स या फीचर इंस्टॉल करने से पहले, या फिर जैसे मैंने अभी फर्स्ट टाइम लॉगिन किया है, तो जैसे ही लॉगिन कर लो अपने सर्वर में, प्लीज ये sysprep कमांड रन कर देना, नहीं तो आपको एरर्स आएंगे। एक सर्वर तो DC बन जाएगा, बट दूसरे सर्वर को जब आप
चाइल्ड डोमेन बनाने जाओगे या फिर आप उसको एडिशनल डोमेन बनाने जाओगे या फिर आप किसी भी सर्वर को मेंबर सर्वर बनाना चाहोगे, सो इन दैट केस यू विल गेट द एरर। ठीक है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए यू कैन गो विद द sysprep.exe, just double click on it and you have to select generalize here and then okay. So it will gonna take around 2 to 3 minutes, and after this a new ID will be generated for this server, and then you can begin your installation onto the servers in case of networking labs only. नहीं करोगे तो एरर आएंगे आपको। ठीक है, ये कुछ okay, so in the background you can see sysprep is working. And okay, meanwhile let's check on the VMware also what's going on over there. Okay, so you can see in VMware also the VM is already configured and we have to provide one super memorable password. तो जो याद रख सकते हो वो पासवर्ड यहाँ पे दे देना and then finish. And this is your console of the server, right? Then how you will be able to log in here? Just go to this bar and then select Control Alt Delete. System का Control Alt Delete मत करना, आपका system lock हो जाएगा. Okay, you need to go to this and you have to select Control Alt Delete, and then you can log in with your password which you have provided to this VM. ठीक है, तो in case you are using VMware, तो आप देख रहे हो ये जो मेरे full screen पे नहीं आया ये, right? This is not available to my full screen. अब मुझे अगर इसका full screen चाहिए, so I have to install one tool called VMware Tools, right? After that I will be able to see this on my whole screen. Okay, so उसको install करना है, then you can go to VM and then you can select install VMware Tools. Select this option. And then run setup. Next, typical is also okay. Next, and install. So this is, guys, basically we are preparing our VMs. Okay, एक बार जब हमारे पास platform already ready होगा, then only we will be able to install the roles and features onto it. तो आज के सेशन में बस हम यही देख रहे हैं कि हमें अपनी VMs कैसे बिल्ड करनी है, हम कैसे कैसे अपनी वर्चुअल मशीन्स बना सकते हैं एंड कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, कैसे इन केस अगर आप नेटवर्किंग लैब्स पे जा रहे हो तो कैसे वहां पे लॉगिन करना है, राइट? वो sysprep कमांड क्यों जरूरी है, तो उस बेसिक चीजों को हम लोग अभी आज के लिए देख रहे हैं. ओके, एंड देन फिनिश. So it needs a restart, but we can take a reboot later on. Okay, and if you want, you can change the computer name as well, host name also. So let's suppose I want to make this server as my primary domain controller, right? So I'm going to name it as PDC. इसके बारे में बात करेंगे, PDC क्या होता है, why I'm naming it as primary domain controller. ये एक हमारा सेशन है. Maybe by tomorrow we are going to start it, and मैं आपको कल समझाता हूँ why we named it as PDC. And then okay, and then okay, close, and we can select restart later. Along with it,
Guys, if you are working on servers, so it is always recommended that we should assign IP to the server, the IP that we are assigning to the server, it should be a static IP. It is recommended, it is not mandatory. मैंडेटरी नहीं है कि आपको स्टैटिक ही डालना है, बट इट इज रिकमेंडेड। ठीक है, अगर आप एक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में काम करते हो, एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आप अगर सर्वर्स पे लॉग इन करते हो, राइट, सो ओवर देयर आल्सो यू कैन चेक आपके जो सर्वर्स होंगे वहां पर स्टैटिक आईपी आपको 99% केसेस में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि सर्वर का काम क्या है, सर्विसेज देना है ना। बट अगर डीएससीपी, लेट्स सपोज आपका सर्वर से आईपी डीएससीपी से जा रहा है, और डीएससीपी ने जो आईपी आपके सर्वर को अलॉट किया हुआ है वो किसी और सर्वर को हो जाता है या फिर किसी और मशीन को हो जाता है। इन दैट केस जो सर्विसेज वो सर्वर दे रहा था, अब क्लाइंट्स को तो उसी आईपी का पता है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आप क्या असाइन करो, स्टैटिक आईपी असाइन करो। Okay, so to go to the IP settings, either you can select Ethernet 0 from here itself, ठीक है, नहीं तो आप वही शॉर्टकट यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ncpa.cpl। अच्छा, मेरे पास जितने भी शॉर्टकट्स हैं जो सर्वर्स में यूज होते हैं, सो आई एम गोइंग टू अपलोड इट ऑन टू योर क्लासरूम पोर्टल। ठीक है, तो आप वो सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हो। सो गो टू ncpa.cpl and okay, and see, you can see the network adapter, go to its properties and go to IPv4 and use the following IP address. So अब आप यहाँ पे क्लास A यूज करना चाहते हो, क्लास B यूज करना चाहते हो, क्लास C यूज करना चाहते हो, it totally depends on your need। ठीक है, जहां पर आपको ज्यादा, जबकि आपके पास एक बिग एनवायरनमेंट है, इन दैट केस आप यूज करोगे क्लास A नेटवर्क। ठीक है, अगर आपके पास एक मीडियम इंडस्ट्री है, मीडियम स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो आप, इन दैट केस यू कैन गो विद क्लास बी। if you are a small scale organization, in that case you can go with class C। ठीक है, so let's suppose I'm going with class C 168.1.1, okay, and by default the subnet mask will be there। So for now I'm not assigning the default gateway, I'm not giving the DNS address, I'm going to leave it as it is। Later on I will let you know why gateway is needed, we will be having the concept of gateways also। अच्छा, क्या आप लोगों में से कोई बता सकता है गेटवेज क्यों जरूरत होता है हमें, why to assign gateways? Anyone? Gateway is required for communicating with internal network. Internal network। सर प्राइवेट से प्राइवेटली नेटवर्क में कन्वर्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। प्राइवेट से प्राइवेट नहीं, प्राइवेट से पब्लिक, पब्लिक टू प्राइवेट। ओके, अदर देन दैट मैं प्राइवेट से प्राइवेट नहीं कम्युनिकेट कर सकता हूँ बिना गेटवे के? नहीं कर सकते। अगर मेरे पास एक क्लास ए नेटवर्क है और एक क्लास सी नेटवर्क है, विल आई बी एबल टू कम्युनिकेट? No। क्या जरूरत पड़ेगा मुझे उसके लिए? गेटवे। ठीक है, तो जहां मेरा नेटवर्क क्लास चेंज हो जाती है, ठीक है, जहां मेरे पास डिफरेंट क्लासेस ऑफ आईपी एड्रेसेस है, उस केस में आई विल बी नीडिंग गेटवेज। ठीक है, हम उसका लाइव टाइम एग्जांपल करेंगे अपने लैब में, डोंट वरी। सो नाउ ओके एंड यू कैन क्लोज इट। अच्छा, यही कॉन्फ़िगरेशन अगर आप पावर शेल के थ्रू करना चाहते हो, ओके, सो दैट आल्सो यू कैन डू, यू कैन गो टू पावर शेल एंड ये जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की है, आईपी एड्रेस हमने दिया है, ठीक है, हमने होस्ट नेम चेंज किया है, सो सेम थिंग, सेम दिस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डन विद अ स्मॉल कमांड
that is sconfig, server configuration. Okay, and enter. तो भी आप देख सकते हो कंप्यूटर नेम, ठीक है। आपको रिमोट डेस्कटॉप अभी आप देख सकते हो इट इज डिसेबल्ड, मींस यू विल नॉट बी एबल टू टेक दिस सिस्टम ऑन रिमोट थ्रू MSTSC, इट इज डिसेबल्ड, राइट। तो ये सब जो आपको 14-15 ऑप्शंस मिले हैं, सो दीज ऑप्शंस यू कैन कॉन्फ़िगर, ठीक है। सो लेट्स सपोज अगर आपको इसका कंप्यूटर नेम चेंज करना होता, होस्ट नेम चेंज करना होता, ऑलरेडी हम कर चुके हैं अभी, बट स्टिल अगर आपको अभी करना है तो आप क्या कर सकते हो, एंटर नंबर टू सेलेक्ट एन ऑप्शन। जिस भी ऑपरेशन को आप परफॉर्म करना चाहते हो वो नंबर आप यहाँ पे डाल दो, ठीक है। लेट्स सपोज यू वांट टू चेंज द कंप्यूटर नेम, देन यू हैव टू टाइप नंबर 2 एंड देन एंटर अ न्यू कंप्यूटर नेम, है ना। तो अब यहाँ पे आप PDC डाल दो, वो तो चलो हमने पहले कर ही दिया है, बट स्टिल you must restart योर कंप्यूटर टू अप्लाई these changes to restart now, ठीक है। आफ्टर रीस्टार्ट ओनली आई विल बी एबल टू सी द चेंजेस, ओके। बट चलो लेट्स सपोज अगेन आई एम गोइंग टू सेलेक्ट नो, वी विल टेक द रीबूट लेटर ऑन। अच्छा, उसके अलावा यू कैन डिफाइन द, आपको देखो डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपडेट्स, आप चाहते हो अभी के लिए जो डाउनलोड एंड इंस्टॉल अपडेट्स हैं ये ऑटोमेटिकली हैं, मतलब जब भी आपका ये सर्वर इंटरनेट से कनेक्ट होगा इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग द अपडेट्स, और जिसके कारण क्या होगा, सर्वर का जो परफॉर्मेंस है थोड़ा स्लो हो जाएगा, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डिसेबल इट, वैसे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। सो इफ यू वांट टू डिसेबल दिस ऑप्शन, देन इन दैट केस यू कैन टाइप नंबर 5 and then enter. So now it is asking Windows update currently set to download only, right? But we have to select manual, मतलब जब मैं चाहूंगा तभी सर्वर डाउनलोड करे updates, right? So what I can do, I can type M here and then enter. Now Windows update set to manual. Now system will never check for the updates until or unless I will not trigger the updates. I will not trigger the check for updates. Till then it is not going to check any of the update if this system is going to be connected with the internet. ठीक है, एक ये काम कर लिया। उसके बाद you can go with network settings. Okay, so for network settings you need to type number 8 and then enter. So for now IP is already configured as 192.168.1.1, right? But अगर चलो आपको फिर से इसको भी change करना है, so now it is asking select network adapter index. तो अभी इसके सामने इंडेक्स क्या है, 0। जो मेरा Ethernet 0 नेटवर्क अडेप्टर है उसका इंडेक्स है 0। ऐसे ही एक सर्वर में वन सर्वर could have multiple network adapters, आपने देखा भी होगा, ठीक है। एक सर्वर में 4, 5, 6 डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, आप कस्टमाइज भी करवा सकते हो अपने अकॉर्डिंग, कि आपको एक सर्वर में 10 नेटवर्क कार्ड चाहिए, दैट इज पॉसिबल, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 10 होते तो इन केस में नंबर जो होते वो 0 to 9 होता, तो मुझे जिस भी नेटवर्क अडेप्टर का आईपी चेंज करना है मुझे बस उसका नंबर, उसका इंडेक्स वैल्यू टाइप करना है, दैट्स इट। एंड देन इट विल आस्क मी फॉर द व्हाटएवर आईपी यू वांट टू यूज, आई कैन असाइन इट, ठीक है। तो मुझे जैसे 0 पे चेंज करना है, सो आई विल गो विद 0 एंड देन एंटर। Now it is asking set network adapter address, set DNS server, clear DNS server settings, return to main menu. Right? So what I need to do, I need to set the network adapter address. Again, I need to type number 1 and then enter. Now it is asking select DHCP or static IP you want to assign. अगर मेरे पास DHCP सर्वर है मेरे एनवायरनमेंट में, so in that case I can select DHCP और DHCP ऑटोमेटिकली इस VM को IP असाइन कर देगा,
ये प्रैक्टिकल भी हम करेंगे, ओके। बट अभी के लिए हमें, जब मैंने आपको बताया कि हमेशा इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपके जो आईपीज हो आपके सर्वर्स पे, इट शुड बी ऑलवेज स्टैटिक आईपी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइप करना है एस एंड देन एंटर। नाउ इट इज आस्किंग एंड एंटर स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो लेट्स सपोज मैं ले रहा हूं 192, अब मैं इसी को चेंज कर रहा हूं, ओके 1.1 से मैं 1.2 कर रहा हूं, एंड देन एंटर। देन इट इज आस्किंग मी फॉर द सबनेट मास्क। अगर तो आपने सबनेटिंग किया हुआ है आपके एनवायरमेंट में, वो आपको आपकी नेटवर्किंग टीम बताएगी, राइट। अगर तो सबनेटिंग आपने किया हुआ है, इन दैट केस यू हैव टू डिफाइन द सबनेट मास्क, ठीक है। अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ोगे सो ऑटोमेटिकली ये डिफॉल्ट सबनेट मास्क ले लेगा क्लास सी आईपी एड्रेस का। अच्छा यहाँ पे डबल डॉट लग गया, सो इट विल गोना, हाँ वो असाइन नहीं हो, देखो डबल डॉट लग गया इधर गलती से। ओके लेट्स डू इट अगेन, नंबर 1 and static, and now we can give the IP 192.168.1.2 and then enter. Then again अगर सबनेटिंग है तो सबनेट मास्क चेंज कर लो, नहीं तो आप इसको ब्लैंक एंटर कर सकते हो डायरेक्टली, राइट, एंड इट विल गोना take the default subnet mask, okay, then enter. Guys just a second, give me a moment please. Okay, yeah Rohit, I corrected it. Okay, now give me a moment. Yeah, so we have assigned the IP and we changed the IP as 1.2. Earlier it was 1.1 and now we change it to 1.2, ठीक है। एंड डिफॉल्ट सबनेट मास्क इसने अपने आप ले लिया। गेटवे अगर आपके पास कोई है तो आप डाल सकते हो, नहीं तो ब्लैंक अभी के लिए छोड़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। नाउ द न्यू आईपी हैज बीन असाइन्ड टू दिस network adapter which is 192.168.1.2. okay, and now if you want you can go to main menu, ठीक है। तो ऑब्वियसली अभी हमने सब चेंजेस परफॉर्म किया है, यहाँ पे नेम चेंज किया था और हमने VMware tools भी इंस्टॉल किया है। सो इन दैट केस we have to reboot the server, okay। So for reboot you can type number 13 and enter. Are you sure? Yes. So this is how you will be able to use a small command which is called server configuration, server config, sconfig, ठीक है। इतना ये reboot होता है। Let's go to the networking labs। तो ये आपको बिल्कुल एक फ्रेश स्टेट से मिलेगा ये VM, and then you can go next. You have to accept the license terms. Again अब यहाँ पे वहीं से आ गया कि आपको सिर्फ पासवर्ड असाइन करना है, ठीक है। So let's suppose, sorry, tab and you have to provide and then finish. अब जो इस सर्वर की आइडेंटिटी है, राइट, वो एक न्यू आइडेंटिटी है। वो जो क्लोन्ड आइडेंटिटी है वो ऑटोमेटिकली अब डिलीट हो चुकी है, ठीक है। तो आपको ये काम हर सर्वर पे करना है, नहीं तो आपको फिर एरर्स आएंगे, ओके। एंड लॉगिन,
Okay, so now you can see, and now whatever the roles you want to install, you will be able to install it onto the servers. अच्छा, पहले देखा था इस सर्वर में कितना कुछ इंस्टॉल्ड था, राइट? अब वो सारा डिलीट हो चुका है, वो सारा डिलीट हो चुका है, राइट? जो शॉर्टकट्स यहाँ पे बने हुए थे, राइट, वो सब डिलीट हो चुके हैं. Why? Because आपने जो वो क्लोन्ड इमेज थी, जो उसकी पुरानी आइडेंटिटी थी, उसको रिमूव करके एक नई आइडेंटिटी दे दी इसको. ओके, तो जो भी सर्वर पे कॉन्फ़िगर करोगे, अगर आप ये लैब्स, नेटवर्किंग लैब्स यूज कर रहे हो, सो प्लीज आप पहले सिस्प्रेप रन करना, तभी आप फर्दर आगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंस्टॉलेशन जो भी आपको करना है, तभी आप अपनी इंस्टॉलेशन स्टार्ट करना. कोई भी सर्वर हो, just run the sysprep command and you will be able to get the new identity, new SID value, and आप फिर अपनी इंस्टॉलेशन कर सकते हो. Any confusion till now? Guys, this is going to be the interactive batch. ठीक है, तो बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है. You can just unmute yourself and you can ask. Any question or any of your query, any suggestion? हेलो Yes, Rohit. सर, जैसे हम सर्वर में एस कन्फिग यूज कर रहे हैं एज हाँ इट, जी. तो ऐसे ही अगर हम क्लाइंट बेस्ड अगर कोई सिस्टम है ओएस है, उसमें कोई कमांड ऐसे यूज कर सकते हैं पावरशेल के PowerShell थ्रू? जो हाँ, PowerShell में तो आप यूज कर सकते हो ना कमांड, क्या इशू है? नहीं, जैसे एस कन्फिग यूज कर रहे हैं, उसमें ऑप्शन आ रहा है कि आप सर्वर आईपी में जा सकते हैं, डोमेन ज्वाइन कर सकते हैं. हाँ, वैसे कोई शॉर्टकट हो जो विंडो में करते हैं, वो तो स्क्रिप्ट के थ्रू हम लोग करते हैं, बट ऐसा कोई है कमांड? कमांड होगा, जरूर होगा कोई ना कोई, राइट? बट वी हैवंट यूज, आई हैवंट यूज्ड इट टिल नाउ, राइट? ओके. It can be configuration manager in case of configuration.xml maybe, but I have to check for the client machine, right? ओके, नो प्रॉब्लम सर. Yeah, yeah. आई आल्सो चेक सर. Sorry. Sir, I told you that I also checked that, Okay, it was but I not there. cannot find the solution. Yeah, maybe it is not there. Because अभी तक मैंने भी कभी काम किया नहीं है इस चीज पे, but obviously if I'll get any option, then definitely I will let you know. Okay. Sir, I work it, but I need to use a script regarding this. स्क्रिप्ट तो काम करता है, स्क्रिप्ट से तो आप बहुत Yes. कुछ कर सकते हो, राइट? बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दिस बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, सो आई डू बिलीव कि ऑपरेटिव क्लाइंट सिस्टम में इट इज नॉट पॉसिबल, बट अगर कुछ ऐसा होगा तो आई विल लेट यू नो. ओके, Okay, sir. Thank I you, will sir. check from my end. Yeah, no problem. Okay, so this is the basic configuration, guys, that we have to do before we start our class. Okay, so let me just a second. Okay, now it is restarted, and now you can see this server is on. I can see it on my full screen, as well as I will be able to log in, and you will be able to check its host name as well. अब कुछ बेसिक सी कमांड्स हैं, राइट? अगर आपको मान लो इस सिस्टम का होस्ट नेम चेक करना है, कंप्यूटर नेम चेक करना है, तो ग्राफिकली तो आप देख ही सकते हो, है ना? बट अगर आपको कमांड के थ्रू करना है, तो आपको सिर्फ होस्ट नेम टाइप करना है, दैट्स इट. कमांड या फिर पावरशेल में कहीं भी होस्ट नेम टाइप कर दो, दोनों टूल में से कहीं भी, ठीक है? So let's suppose if I'm going to the command prompt, I will type host name and enter. So you can see the new name is PDC. Likewise, you can check the IP configuration also. You can see it is 1.2. Earlier it was 1.1, but with the command, with the PowerShell command, we changed the IP to 1.2. ठीक है?
तो अभी हमें जितना भी काम करना है सर्वर्स पे, उसके लिए आपको एटलीस्ट 2 VMs तो सर्वर की अभी बना लो, 2 VMs तो सर्वर के लिए बना लो, राइट, और 2 VMs बना लो आप क्लाइंट मशीन के लिए, so that अगर हम डोमेन कंट्रोलर बनाएंगे, we are going to check whether the client machine is able to join our domain or not, right, या फिर जो भी आपने डोमेन पॉलिसी बनाई है, राइट, क्या वो क्लाइंट मशीन्स पे अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है. So for multiple things we have to use our client machine. So I would recommend to at least create 2 client machines in your VMware or Hyper-V. अच्छा, अगर तो आप Windows 10 Pro यूज कर रहे हो या फिर एंटरप्राइज वर्जन यूज कर रहे हो, राइट, इन दैट केस Hyper-V आपको उसी में इंस्टॉल्ड मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा, आपको जस्ट उसको टर्न ऑन करना है. ठीक है, सो फॉर दैट यू कैन गो टू टर्न विंडोज फीचर ऑन और ऑफ, राइट, और यहां पर आपको चेक करना होगा Hyper-V, राइट. सो अगर तो ये है Windows 10 Pro यूज कर रहे हो तो आपको ये सेलेक्ट करना है Hyper-V, and it will ask you for a reboot, and after the reboot आप यहाँ पर अपने सिस्टम में Hyper-V चेक कर सकते हो. You will get the Hyper-V in your system itself. बट अगर Windows 10 होम वर्जन है, in that case also need not to worry. मैं आपको एक स्क्रिप्ट दूंगा, that script you have to run in your system. After running the script, again it will gonna ask you for a reboot, and उस reboot के बाद आपको Hyper-V आपके सर्वर, आपके मशीन में Windows 10 होम में भी आपको Windows Hyper-V इंस्टॉल्ड मिलेगा. ठीक है, तो चॉइस इज टोटली योर्स, आपको कैसे काम करना है. आपको Hyper-V पे करना है, Hyper-V पे कर सकते हो, आपको VMware पे करना है, आप VMware पे कर सकते हो. बट अगर आपके पास कॉन्फ़िगरेशन अच्छा नहीं है, इन दैट केस यू कैन गो विद नेटवर्किंग लैब्स आल्सो. एक्चुअली ये टूल्स क्या है ना, अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो, इफ यू आर गोइंग फॉर द सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, तो वहां पर कई बार मेंशन होता है दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ VMware, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ Hyper-V. तो इसीलिए मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को मेरे एंड से कि आप अपने ही सिस्टम्स पे कॉन्फ़िगर करो तो ज्यादा अच्छा है. ठीक है, और हाँ, बट अगर लिमिटेशन है, सिस्टम अच्छा नहीं है हमारे पास, इन दैट केस वी कैन गो विद नेटवर्किंग लैब्स आल्सो. मैं आपको कंसेप्ट जरूर बता दूंगा दोनों के. ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल्स हम लोग Hyper-V भी परफॉर्म कर लेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू गेट द कंसेप्ट ऑफ बोथ द टूल्स. ठीक है, सो दैट आप अपने CV में मेंशन कर सकते हो that you have worked on VMware and you have also worked on the Hyper-V too. ठीक है, तो कल प्लीज डू ट्राई कि आपके पास, मैं एक डायग्राम शो बना देता हूँ कि एटलीस्ट आपके पास ये चीजें कॉन्फ़िगर्ड हो, सो दैट कल हम अपना पहला प्रैक्टिकल डिप्लॉय कर लें. So try to build 2 server machines. Operating system can be same on both. Yes. Okay. For now it would be same, but हमारे पास कुछ practicals हैं in case if you are running with the previous version of operating system, so how to upgrade it in the live environment, in the production environment. Okay. ठीक है, so I will give you both the scenarios, don't worry. Okay, sir. Thank you. And 2 servers is needed, and then you have to configure 2 Windows VM also. Windows VM machine. So these either you can configure on your Hyper-V or you can configure on your VMware. Already links आप सबके पास है, तो ये सब कर लेना. और इससे पहले आप लोग ट्राई करना पहले, राइट, इफ यू आर गेटिंग एनी काइंड ऑफ इशू, सो बिफोर अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम लोग पहले आपके एरर्स डिस्कस कर लेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर टॉपिक. चलेगा? Sure, sir. Sure. Okay. So before we wrap up, if you have any confusion with regarding the course, you can ask. So have you guys also enrolled for SCCM? Yes, I am. Okay.
Can you guys please raise your hands? Who else installed in the, enrolled in the SCCM course? Can you raise your hands? Guys, there is an option in the chat itself. ऐसा ना हो कि आप अपने सिस्टम के पास बैठ के हैंड रेज कर रहे हो. Just kidding. Okay, no worries. In between, if अगर आप लोगों ने भी enroll नहीं किया, so in between I will let you know. मैं कोई एक आपको थोड़ा सा overview दे दूंगा SCCM का, right? So that अगर आपका interest बनता है, so you can enroll for your SCCM batch also. ठीक है? Okay. So see you tomorrow, guys. So I would recommend you to go with all the installations. Already you have all the links and all. And tomorrow I'm going to create the classroom also for you. Yes, sure, Deepak. This is what I was telling you. कि I am going to create a classroom. ठीक है, वहां पर आपको सब PPT, सब आपके assignment, सब आपके study materials, जितनी PDFs मेरे पास available हैं, with जो सर्वर से रिलेटेड है, सो आई एम गोइंग टू अपलोड इट. एंड कल हम उसका क्लासरूम बनाता हूं मैं कल, और आपको कल लिंक शेयर करता हूं. ओके, ओके गाइस, सो सी यू टुमारो. गुड नाइट एवरीवन, टेक केयर. Good night. Thank you, sir.